Yes, ma'am. Ma'am, once again, good morning. Good morning. So, good morning, all the participants, and welcome to the session. Dear participants, there was a big gap in between 2-3 days because of Independence Day and some festivals, so we could not have session. Anyway, today we have another very dynamic and energetic speaker with us, Madam Dr. Anita Das. She is Associate Professor at LNIP Gwalior. And dear participants, for your kind information, Madam was my teacher during my LNIP days. So I am really happy to see Madam on board. She has delivered session in our 7th batch and previous batches as well. So without further much delay, on behalf of Ministry of Education, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Sport Authority of India, Khelo India, and the entire team of E-Khel Pathshala, New Delhi, and the organizing team from Sai LNCP Trivandrum, on behalf of our principal, sir, Dr. G. Kishore, I, Dr. Narendra Gangwar, the coordinator of the program, would like to extend my heartiest welcome to Madam for coming and accepting our invitation to deliver the session. I also welcome all the participants of this E-Khel Pathshala, because you are the important pillar of this all initiative. Without you, it is not going to be successful one. So once again, welcome you all. Dear participants, let me take this opportunity to introduce Madam. As I mentioned, she is very dynamic and energetic, working in a lot of areas. So Madam is presently working Associate Professor in the Department of Health Science in LNIP Gwalior. Madam's area of interest in research is physiology, health and fitness, and soccer. Madam has guided many PhD scholars. 2 of them already submitted their thesis, and 3 scholars pursuing their research under Madam's guidance. She has assigned as the in charge of women's football team of the institution, that is from many past years, and a lot of glory she brought during the team brought during her guidance. Madam also in charge of Institute Center for Technology, LNIP Gwalior. Madam has presented research paper in pre-Congress of 2010 Commonwealth Games, New Delhi. Madam also presented international research paper in pre-Olympic Congress, Liverpool 2012, England. She has also delivered presentation on the research paper World Congress in Philanthropy in Santiago, Chile in 2018. Madam was the bronze medalist in Women's International University Football Tournament 2002. She is a coach and manager of women's football team LNIP in first Khelo India Inter-University held at KIIT Bhubaneswar. Madam has also published 5 books on football, health education, fitness, sports marketing, and she has also written a chapter in CBSE textbook of class 11 and 12th. Madam is also coordinator of Literary Society of LNIP. Dear participants, as I mentioned, Madam has a lot of credential in his shoulder. So without taking further, I expect that Madam is going to be deliver a very good session, and that is going to help you all. So I would request all the participants, please be attentive throughout the session. Any interaction, if you want, please write the question, raise the question. Madam will be happy to take. So without delay, Madam, once again, on behalf of entire team, we welcome to you for the session. Over to you, Madam, please. Thank you, Dr. Gangwar. Thank you for that elaborate introduction of mine. I am grateful and I am thankful for giving me an opportunity by the joint effort of Coach Authority of India, Khelo India, Ministry of Youth Affairs and Sports, and Sai LNCP, Dr. G. Kishore sir, and Ministry of Education as well, for addressing such an important, such a sensitive, and such a valuable topic that I am going to take up today and discuss with you all today. On high alerts, please remember this is a very, very sensitive topic, and deal with it very sensibly, with a lot of sensitivity, keeping your eyes, ears, and I think conscience
open, wide open, so that we can carry out this very, very delicate, nazuk jise kehte hain, topic in a very positive and fruitful manner. Ultimately, it should be helping the whole education system, the whole coaching system. Ultimately, what the purpose of this platform of E-Khel Pathshala is to develop and improve the standards of our children. So I hope I shall be instrumental in delivering the lecture in such a way that you kind of receive this sensitive and delicate topic in a very positive manner. Without further delay, I would like to share my screen. Now, the topic given by E-Khel Pathshala to me. Should I continue, Mama? Yes, ma'am, please. Okay. So the topic given to me by E-Khel Pathshala was safe environment for protecting and safeguarding children. When we are talking about children, what do we understand by them at the first go? Let's not talk about protection and environment at this moment. We are talking about the main subject now, that is the children with whom we are dealing. So who are these children? Chronologically, if we go, then the child is one who is under the age of 18. Biologically, if we go, then below the attainment of puberty stage or level. Legally, if we go, then attainment of the legal age of majority when he or she is able to vote for the country's election. So these are the various categorization of a child: chronologically, biologically, legally. Sometimes also beyond this categorization, when we talk about a child, they can also be someone who is immature and irresponsible, and someone who will not be able to take a very serious and important decision very immediately and very quickly. Now we come from the subject to what we are supposed to do. We are supposed to protect as coaches, teachers, instructors, parents, caregivers, whoever we are. Because we are here to look up, we are working with the children. We are there to safeguard them, to protect them. What is protection? To protect children from impairment, to prevent impairment, from any kind of deterioration of their present status or health. In fact, trying to improvement of their present status. So we will prevent the impairment, we will prevent the deterioration. And what do we understand by safeguarding? The protecting the children from maltreatment, protecting the children from preventing impairment of their health or their development. We will only try to improve their status, not deprove it. So these are more or less the topic that we are talking about: protecting and safeguarding of whom? Of children. Children who are chronologically something, biologically something, and legally something. Why are we talking about children? Now the sensitive part, I think, has started. Most of you know me as a happy, giggly, and energetic girl. But lately, I have felt a bit broken, and the more I try to shut off the voice in my head, the louder it screams. This was quoted by none other than the famous gymnast Simone Biles. Yes, the most decorated Olympic gymnast of all times, with maximum number of medals in the World Championships as well as Olympic Games. Yes, we are talking about none other than the famous gymnast, the most decorated gymnast of all times, Miss Simone Biles. She reported that she was sexually abused by former USA gymnastics team Dr. Larry Nassar, and has been more than 140 women
who have been abused over the years, and they reported just after Simone Biles took the initiative to report. So with this opening statement, I hope you understand the subject's delicacy, the subject's sensitivity, and what we are talking about when we are talking about protecting and safeguarding children, when we are dealing with so many children's career, so many children's future, so many children's medals in the years to come. When we are talking about the mechanisms, the areas that I'm going to highlight and cover in this presentation are that we observe health and safety procedures, child protection in sports, which is the POCSO Act 2012, introduced by the legal procedures, create a safe environment for play, prevention strategies, how to prevent certain accidents, how to prevent certain falls, certain things that we can avoid and protect our children while they are participating in sports and other activities which are related to health and fitness. Participation in competition do's and don'ts and court safety and protection, appropriate physical contact. Protection of children from sexual offences, the POCSO Act. The Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 and its corresponding rules were enacted with the objective of protecting children from plenty of sexual offences and introducing child-friendly judicial mechanism for dealing with such offences. ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि चिल्ड्रन को हम प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम मेनी सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होता जा रहा था, उनकी कोई कंप्लेन, उनकी कोई रिपोर्ट, उनका कोई एक्शन, उनका कोई रिजल्ट, उनका कोई पनिशमेंट नहीं हो रहा था. But alarming information is that in spite of the existence of such comprehensive child sexual abuse laws in our country, the incidents are increasing. Even if we have POCSO Act, which started, that is the 2012 Act, still ये देखा जा रहा है that report of such an act बढ़ता ही जा रहा है. It is increasing. It is not deteriorating in numbers, decreasing in numbers. According to a survey conducted in 2017 by World Vision India, 1 in every 2 children is a victim of sexual abuse in India. Just imagine the statistics that I am going to tell you. आंकड़े जो हम आपको अभी presentation में बोलने वाले हैं, मैंने पहले भी बोला है, हाई अलर्ट में रहिए, सेंसिटिव टॉपिक है और आपको बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने को मिलेगी जो कानों को सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन ये ही सच्चाई, फैक्ट्स, हकीकत है. So 1 in every 2 children is a victim of sexual abuse in India. Another very important thing to note in this case is that the offender, that is the perpetrator बोलते हैं technical language में, the offender जो offense करता है, जो ये abuse करता है, are often known to the victim. They are known people to the victim. This is the most important part of the whole act, of the whole incident, of the whole situation. That जो perpetrator है, जो offender है, जो abuser है, वो बहुत ही known person होता है. And many a times it makes the victim reluctant to complain or report about the incidents. और यही कारण है कि वो कई बार victim जो है वो reluctant हो जाता है, 2 step पीछे चला जाता है, 5 step पीछे चला जाता है to complain or report against
this incident that has taken place against him or her, and they do not complain or they do not report this incidents because the perpetrator or the offender is most of the times a very known person, बहुत ही करीबी कोई होता है. Now, the 5 critical things that one should know about the POCSO Act. Why we should know? Because if we know, then it will be easier for us to deal with such heinous crimes, such important issues, such issues that are so much related to the protection of the children. At a very tender age, if they go through such problems and such traumas, that may create a lot of impact in their heads for the rest of their lives. And remember, 39% of the population of India now are the children who are going to grow up and become the next generation leaders. 39% of this population are children. So this 39% is a big bulk. ये बड़ा हो रहा है और next generation का leader होने वाला है. तो ये 39% अगर 19 होता, 10 होता, 5 होता, 6 होता, एक बार को हम ये भी मान के चलते कि population less है. But 39% is quite a bigger population. So it is a general neutral law. General neutral law से ये clear हो जाता है, very indicative of the first line, that the child under the age of 18 years, POCSO sets them as general neutral tone. That is, this enables a child for any gender who has been sexually wronged, be it a girl, be it a boy, or be it a transgender, who has been sexually wronged, has the access to the remedies provided under the Act. This Act also does not distinguish between the offender or the perpetrators of child sexual abuse on the grounds of gender. ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि अगर जो ऑफेंडर है वो मैन या मेल होगा तभी एक्शन लिया जाएगा और फीमेल होगा तो एक्शन नहीं लिया जाएगा, या ट्रांसजेंडर होगा तो एक्शन नहीं लिया जाएगा, या ट्रांसजेंडर होगा तो एक्शन तभी लिया जाएगा क्योंकि वो ऐसा नहीं है. दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ. Those who are doing it, in that also it is gender neutral, and against whom it is being done, in that case also it is gender neutral law. So that one should understand. This is the first very critical thing to know about the POCSO Act. The second is not reporting abuse is also an offense. If an abuse has taken place, if someone has wronged you, if गलत आपके साथ हो चुका है और आप उस abuse का offense तो उस अब्यूज का कंप्लेन नहीं कर रहे हैं या रिपोर्ट नहीं जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, then also it is considered as an offense. The one of the most important aspect is mandatory reporting obligation imposed under the section 90. Without reporting, the abuse will not be considered as an abuse and no punishment will be given or nothing, no action will be taken. अगर आपने report नहीं किया है तो no action will be taken. So this requires every person who suspects or has knowledge of a sexual offense being committed against a child to report it to the local police or to the special individual police unit. अगर किसी ने देखा है ऐसे होते हुए, if not actively involved, सिर्फ देखा ही है और अच्छे से इसका witness है, इसका गवाह है, and is keeping quiet and is not going to report it, then that is also an offense. One who has seen it and is witnessed it should go and report it to the police unit. Maintaining the confidentiality of the victim's identity. Section 23. इसमें पॉक्सो ने वेरी क्लियरली ये बोल दिया है कि इफ द मीडिया इज फ्लैशिंग द न्यूज in the news channels and in the print media or in the social media, then they are not supposed to disclose the victim's identity. The victim's name will not be disclosed.
फलाने के साथ ऐसा हुआ है, they will just give a different kind of a name to that person and a different kind of image to that person, और एक कोई उसको enact कर रहा होता है सीरियल में जैसे दिखाते हैं, क्राइम पेट्रोल में जैसे दिखाते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, but you cannot disclose the victim's name and identity. But yes, sometimes with the directions and permission of the Supreme Court in 2018 under special act, then the revealing of the identity is allowed, because it is a very important case, very important thing and message to be imparted to the rest of the society, to the world. In that case, only under special permission by the Supreme Court in 2018, the victim's identity can be revealed. No time limit for reporting the abuse. It is obvious that the victim of such abuse go through a lot of trauma. Hence, it is not possible for the victim to report or complain immediately. So, Indian law ने, Indian Judiciary Act ने, Union Ministry of Law and Justice ने इसको बहुत clearly clarify किया है that there is no time limit or age bar for reporting the sexual offense under the POCSO Act, because जब आप इस heinous crime के through गुजरते हैं, इस trauma के through गुजरते हैं, इतना कुछ आपके साथ हो चुका होता है, तो आपका बॉडी एंड ब्रेन दोनों ही इतना इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करने के लायक नहीं रहता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ preparation to come back, to bounce back, and then go for a complaint, because there are many consequences of the complaint also. To report also takes a lot of courage, takes a lot of जिसको कहते हैं हिम्मत बहुत बनानी पड़ती है, तो वो हिम्मत इमीडिएटली नहीं आ जाती है. उस हिम्मत को बिल्डअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं. हमारे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने पॉक्सो एक्ट में ये क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि यू कैन टेक 10 years, 15 years. There is no age bar. आपके साथ अगर ये 7 साल में हुआ है या 8 साल में हुआ है, तो आप 18 years में जाकर जब आप एडल्ट हो चुके होते हैं, जब आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, आपका मेच्योरिटी लेवल लीगली, फिजियोलॉजिकली एंड क्रोनोलॉजिकली तीनों तरफ से आप संभाल सकते हैं, then also you can go for the complaint and the report. It is not that there is some time limit in which you can come and report. The complaint or the reporting can be done after a number of years. Lapse of time is definitely not a reason for not putting up the complaint against their employees in matters of sexual abuse. One very important thing to know over here is even progressive countries, जितने भी हमने USA देख लिया, हमने UK देख लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया, progressive countries में भी, western countries में भी उन्होंने time limit रखा है. But only the Indian Ministry of Law and Justice has been that flexible with the time limit, that there is no time limit for the child who has gone through all this abuse, all this sexual abuse and trauma, does not have any time limit to report it. So I think that is a very important progressive way of dealing with such a issue in as far as the protection of the child is concerned. In 2020, the government has introduced many new POCSO rules. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा 5 नंबर जो रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, because any institution who have children involved is required to conduct a periodic police verification and background check of every employee who might interact with the child. कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो चिल्ड्रन के साथ इन्वॉल्व है, जिसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन फिटनेस कर रहे हैं, चिल्ड्रन ट्रेनिंग कर रहे हैं, चिल्ड्रन कोई गेम या स्पोर्ट को सीख रहे हैं, कोई ट्यूशन में जा रहे हैं,
या कोई और आर्ट क्लास में जा रहे हैं या डांस क्लास में जा रहे हैं, जहां पे भी चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, उधर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक होना एंड पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। वो आपको आपके पॉलिसी में लाना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड गिविंग देम अपॉइंटमेंट लेटर, whoever it may be, at the biggest and the highest authorities and the lowest of the cadre who are working in that school, in that fitness center, in that academy, cricket academy, football academy, gymnastic academy, in that tuition coaching, in that art class, dance class, music class, wherever the child is going. Such an institution must impact regular training to the sensitization of the employees of child safety and protection. आपके टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स होना, क्लिनिक्स होना, सेमिनार्स होना, कॉन्फ्रेंसेस होना on the topic of child sensitization, on the topic of child safety and protection बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहना इंपॉर्टेंट है, so that अगर कोई भटक भी रहा है, अगर कोई अपने राह से, अपने दिशा से दूसरे डायरेक्शन में चल भी रहा है, जाने की सोच भी रहा है, तो you bring them back to the right track and the right path and let them not get diverted to some wrong path and wrong direction. And that is why Khelo India, in collaboration with Sports Authority of India and Sai LNCP, has taken up this initiative to bring this as an important topic for this E-Khel Pathshala as well, so that we are also going through this from time to time and knowing that what kind of problems we can face or create if we are not protecting our children and safeguarding our children. Such an institute has to adopt a child protection policy based on the principle of zero tolerance to violence against children. ये उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा जहां चिल्ड्रन को आपने इन्वॉल्व कर दिया, जहां चाइल्ड आता है आपके इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल हो या जितने भी मैंने एग्जांपल्स अभी आपको पहले पॉइंट्स में दिए हैं, उन हर जगहों में आपको ये पॉलिसी पहले ही बता देना है बिफोर द टाइम ऑफ appointment, giving them the appointment letter during that time, that it is a zero tolerance to violence against children. So you please take care of it. Anything that comes as a complaint against you as far as the child is concerned will be taken very seriously and you will be dealt very, very strictly. So that should be in the policy itself. And I will talk about many International Olympic Council's policy, that is the highest authority of sports that we are talking about, how they are making their policies, and it is in print. If you go to Athlete 365 portal, you will get in print that these are the policies, how the reporting has to be done, how the complaint has to be made, who are the people responsible for dealing with the complaint if such a complaint is made. It could be Simone Biles, it could be any big short celebrity player who brings laurels to the countries, and if they are giving complaints, then how it has to be dealt. These are the IOC framework for safeguarding athletes and other participants from harassment sports. You can see the scope of application, and then we can see the reporting and procedure for addressing incidents of harassment and abuse. And in this is a very, very important part actually. If they have a policy, if they have something in print, in writing, in black and white, then all the organizations and institutions, if they have students, children under the age of 18 involved in their organization and institution, they must have it in writing, like documenting all the reports of harassment and abuse, determining whether the follow-up is warranted or not, and following that it will be recommending whether a case should be submitted to the IOC Disciplinary Commission, notified to local authorities as per the local law, providing support to any concerned person. Then comes the reporting and procedure for addressing incidents of harassment and abuse. The reporting channels
through which the alleged incident is going to be reported in by communicating the IOC Medical and Scientific Commission. See, here the Medical and Scientific Commission को आप सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं जहां इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की बात आ गई. सेफगार्डिंग द ऑफिसर्स ईमेल एड्रेस, जिस ऑफिसर को ईमेल करेंगे ये सारा रिपोर्ट उसको सेफगार्ड करना है, वो हैक ना हो जाए, वो बहुत एनक्रिप्टेड हो, वो बहुत प्रोटेक्टेड हो. रिपोर्टिंग इट ऑन द सेक्शन ऑफ रिपोर्टिंग इट जाएंगे उस सेक्शन में तो क्लिक करना पड़ेगा रिपोर्टिंग इट वाले सेक्शन में और वहां क्लिक करके ये रिपोर्ट करना है. देन देयर इज अ फ्लो चार्ट ऑफ हाउ दिस होल थिंग वर्क्स. There is a no object, all this NOC safeguarding policy and all that is there. There is also a flow chart for how there is investigation procedures, there is reporting procedure, there is education and prevention. ये जो आप E-Khel पाठशाला में इस sensitive topic के बारे में बात कर रहे हैं, this is education and prevention. And then we come to reporting procedures, even investigating how the investigation is to be conducted, then support and of the concerned person, the one who has actually complained and has reported against the coach or the nutritionist or the doctor, like Simone Biles' case, it was the America's national doctor, team doctor, and then the disciplinary procedure, the measures and sanctions to be taken. So it has a full in-print, black and white procedure of how the International Olympic Council works. Then we have this, it should be a fair process for both the parties. The involvement of the relevant public authorities and other organizations. कॉन्फिडेंशियलिटी, अभी हमने पॉक्सो में भी पढ़ा कि हाउ द कॉन्फिडेंशियलिटी, हाउ इसको सीक्रेट रखना है, हमें नाम नहीं पहले ही डिस्क्लोज करना है, हमें फोटोज मीडिया में नहीं डिस्क्लोज करना है, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एथलीट्स. ये सारी बातें हम लोगों को इन प्रिंट इन आईओसी में अगर मिल सकता है तो कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हर ऑर्गेनाइजेशन एंड हर इंस्टीट्यूट को छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, मीडियम से मीडियम लेवल में जो काम कर रहे हैं, जहां चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, वी हैव टू मेक सच black and white, in black and white, some policies. This is the whole flow chart in which we can see that how the process actually follows. The report of the suspected harassment and the abuse is filed, report received by the safeguarding officer, then safeguarding officer coordinating it with the relevant departments, then it is sent to the public authorities, then unlawful potential authorities. So इस तरह से एक तरीका बनाया हुआ है, decision by public authorities, then safeguarding officer for follow up, then the issue or no issue, safeguarding officer for follow up again, then preparation of the disciplinary file, disciplinary inquiry hearing, then disciplinary decision by the commission, then notification to the persons involved, both the parties, then communication of decision. This is how it works. So you can go to Athlete 365 portal and click. All the details of the policies will be very clear of how this whole complaint process and reporting process takes place, and then the punishment eventually if it is proved. Now, safety from harassment and abuse. What are the terms that we need to know when we are talking about the this very sensitive topic? Psychological abuse. When we are talking about the psychological abuse, we are talking about any kind of humiliation, any kind of treatment which may demean your identity, your self-worth, make you useless, worthless, make you assault. आपको ये बार-बार बताया जा रहा है और जताया भी जा रहा है कि आप useless है, आपका कोई वर्थ नहीं है, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है, वजूद नहीं है,
और आपको बार बार ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, बुरे बातों से, बुरे लैंग्वेज से असॉल्ट किया जा रहा है, आप पे हाथ नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली हर वो चीज किया जा रहा है जिससे ट्रॉमा क्रिएट आपके ब्रेन में, माइंड में हो सकता है और हो रहा है. कमिंग बैक टू फिजिकल अब्यूज, any deliberate and unwelcome act like punching, beating, kicking, biting and burning that causes physical trauma or injury forced on inappropriate physical activities, for example training loads. इसमें आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं क्या क्या शब्दों का यूज किया गया है. पंचिंग, आपके मुंह में पंच मारना, घूसा मारना. बीटिंग, आपको मारना. किकिंग, लात मारना. बाइटिंग, काटना. एंड बर्निंग, आपको जलाना. दैट कॉजेस फिजिकल ट्रॉमा और इंजरी. कभी कभी आप ये सारी चीजें भी नहीं करते हुए एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपके ट्रेनिंग सेशन में आप एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं. इस लोड का इस टाइम ऑफ द सेशन में बिल्कुल कोई जरूरत नहीं था, डिजाइन नहीं था, आपके शेड्यूल में नहीं था, आपके प्लान में नहीं था, लेकिन आपने ये फोर्स किया इनअप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटीज. आपने उनको इस तरह का लोड देने का डिजाइन ऑल ऑफ अ सडन किया, आपके प्लान के बियॉन्ड जाके. इस ट्रेनिंग लोड का कोई जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा दे दिया कि उसी से पेन एंड इंजरी हो गया. आपको मारना, बाइट करना, बीट करना, पंच करना, किक करने की जरूरत नहीं पड़ी. Sexual harassment, any unwanted and unwelcome conduct of a sexual nature, whether verbal, आपने मौखिक शब्दों का यूज किया जो सेक्सुअल नेचर का है, या नॉन वर्बल, आपने बिल्कुल कोई वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, लेकिन आपके जो जेस्चर थे, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन थे, जो आपका तरीका था उसके सामने डील करने का और कुछ एक्शंस दिखाने का जिसमें आपने वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, वो सेक्सुअल हरासमेंट में आता है. सेक्सुअल अब्यूज, एनी कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर वेदर नॉन कॉन्टैक्ट. यहाँ पे भी आपने मे बी यू आर नॉट कॉन्टैक्टेड द विक्टिम, आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया, टच नहीं किया, but it can also be contact or penetrative where consent is coerced, मतलब forced, मतलब imposed, मतलब आपका कोई भी प्रकार का कंसेंट विक्टिम के तरफ से नहीं था, बट ये फोर्स्ड है. ये कॉन्टैक्ट, ये हाँ नहीं था, ये ना था, इट हैज बीन मैनिपुलेटेड और इट कैनॉट बी गिवन. ये सेक्सुअल अब्यूज में आ जाएगा. नेग्लेक्ट, another very important aspect that many of the times the teachers, the coaches, the instructors, the caregivers are overlooking and ignoring. You don't look at a person, you don't give importance to a person, you neglect the person, you don't consider him or her important for the selection of any kind. It can be in the physical education class about other good students who are academically very strong. आपने उनकी तरफ देखना जरूरी ही नहीं समझा क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है, या कोई और एकेडमिक क्लास में, साइंस में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, the physical education student who is very good in sports and other physical activity is not good in the studies part, who are neglecting. That is creating a lot of trauma. आप समझ नहीं रहे हैं, हम कई बार इसको नजरअंदाज करते हुए चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है, बहुत नेग्लिजेंस क्रिएट कर रहा है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत डेवलप हो रही हैं जाने अनजाने. टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता. उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया. सावधान रहना. हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी. बाय बाय. कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती. तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और
और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दे। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपनी दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग-थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले। क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल न आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनीता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। ये बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई और प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और उत्पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। टीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरिए मत। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिससे आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है। जिम्मेदार अभिभावक, शिक्षक व सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भय मुक्त और जीवंत शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें। So you have seen a very clear and very indicative video, and continuing with that, whatever we just saw on screen,
it is very important that we clear the mechanisms of harassment. What are the mechanisms of harassment? जो offender या perpetrator करता है, उनके mechanisms क्या-क्या है? जैसे they are contact, they are non-contact, they are verbal, cyber negligence, bullying, and hazing. As far as contact and non-contact is concerned, we have already हमने discuss कर लिया पहले previous slides में. Contact and non-contact gestures से भी हो सकते हैं, कुछ actions से हो सकते हैं, कुछ facial expressions से हो सकते हैं. You're not using any words, you're not doing anything in touching, but you still have a non-contact way of abusing someone. As far as the verbal thing is concerned, you know that you are using verbal abusive words and wrong jokes and very loose talks and very foul language. एक है cyber negligence. हम अपने बच्चों को ये कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा हुआ कि आपने गेम, आपका बच्चा भी क्या करे, जाता नहीं थे बाहर और आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल बंद थे. सो वी अलाउड देम अ लिटिल बिट ऑफ मोर स्क्रीन टाइम विद games and all, and in those games and all we have seen this PUBG being very popularized, and we have given our email ID or whatever contact phone numbers, and this that has also created a channel for the cybercrime people to actually commit a lot of criminal activities and online cyber offenses. Lots of activities have taken place through those numbers. When they used to play, they used to take those numbers that used to be hacked, and that has also created a lot of problems. So that is another cyber negligence. Parents are sometimes negligent about, you know, what they are typing, where they are sharing, what kind of things they are sharing on social media, whether they should be doing this with the numbers that they have, the phone numbers they have. ये देखने की कुछ चीजें हैं. Negligence में बच्चे को ये सब मालूम ही नहीं होता है और हो जाता है. And bullying. आपको कोई जो थोड़ा स्ट्रक्चरली एंड फिजिकली मोर स्ट्रॉन्ग है, स्टाउट है, एक्टिव है, वो जो वीकर है, जो थोड़ा हाइट में शॉर्ट है, थोड़ा थिन है, उसको बुली कर रहे हैं, या एक rich one in the school knows that this one is a poor one, that kind of bullying is being done, or some, you know, casteism has come through some way, some teacher has promoted it, or some administrative staff has promoted it, and they are doing the bullying because of on the basis of caste. So, or creed, or language, or the community that the child belongs to. These kind of bullying is also not allowed and should not be allowed at all. And इसके भी punishments या इसके भी कुछ disciplinary committee का काम actively होना चाहिए, so that it is discouraged in the school at all. इसको कोई भी प्रकार का प्रोत्साहन ना मिले, and किसी भी प्रकार का trauma वो किसी भी बच्चे पे unnecessary create ना करे. Hazing. Now, this is a very important term. When we talk about hazing, to harass someone by exacting unnecessary or disagreeable work, or to harass by ridiculing or criticism. It may also be unpleasant, unnecessary, hard labor. जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आप 2 घंटे स्कॉचिंग हीट में, बिल्कुल भयंकर गर्मी में, भयंकर धूप में घास काटी, और आप पूरे ग्राउंड को एकदम साफ कर दीजिए, जबकि आपके पास ग्राउंडमैन है, आपके पास गार्डनर है, but still the students will be doing it, and those particular students will be doing it who have not listened to the, you know, the instructions of the teacher, or the PE teacher, or the coach, or the trainer. And this is the punishment that the teacher has decided for them, that you will do hard labor, you will do some unnecessary disagreeable work, and also ridicule the child and criticize all the time that you are useless.
तुम बिल्कुल निकम्मे हो, तुम्हारा कोई वर्थ नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको तो ट्रेनिंग सेशन में लेना एक बहुत बड़ा हेडेक है और तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम कुछ भी काम करने के लिए लायक नहीं हो। ये सारी क्रिटिसिज्म और रिडिक्यूल कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेजिंग, दिस इज ऑल्सो मैकेनिज्म ऑफ harassment. Let me clarify it with all of you who are attending this E-Khel Pathshala. You think you are not doing any kind of those kind of abuse which is known as the sexual abuse or the physical abuse or the psychological abuse, but you are kind of doing some kind of a hazing which is also a mechanism of abuse. Bystanding, one who is present but not taking part in the situation. आप बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे सिनेरियो में। आपने देखा क्या हो रहा था बाथरूम के बगल में या कोई और कोने में, जैसे वीडियो में अभी बताया गया, जो जगह ज्यादा लोग आते नहीं है उन जगहों में आप पहुंच गए थे गलती से इत्तेफाकन और आपने सारी चीज देखी थी। आपको मालूम है आप एक बहुत बड़ी विटनेस है इस पूरे सिचुएशन के, लेकिन आपने ये डिसाइड किया है कि आप इस झमेले में नहीं पड़ने वाले हैं और आप बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आप चुप रहेंगे, क्योंकि चुप रहने में ही भलाई है और शांति है। नॉट टेकिंग पार्ट इन दिस सिचुएशन और इवेंट और गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग इट is known as bystanding. The impacts of abuse, इस abuse का impact क्या है, इस abuse का effect क्या है, इस abuse का असर क्या पड़ रहा है एथलीट के ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर। अगर हम चाइल्ड को देख रहे हैं तो फिजिकल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ रहा है, कॉग्निटिव, उसके ब्रेन के नॉलेज, उसके डेवलपमेंट, उसके इंप्रूवमेंट के ऊपर पड़ रहा है, इमोशनल फियर आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, इमोशनल इम्पैक्ट, बिहेवियरल, the way he is supposed to behave or she is supposed to behave, वो बिहेवियर नहीं मिल रहा है, बल्कि कुछ ऑपोजिट और डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में बच्चे को रखें तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन में ही हमें पता चल जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग विद द चाइल्ड, देयर इज समथिंग रॉन्ग, something is not right, he is not behaving the way he used to or she used to behave. बिहेवियरल पैटर्न में चेंज आना, मेंटल एस्पेक्ट्स में जो वो एकेडमिकली काफी अच्छा था या अच्छी थी, उसके रिस्पॉन्सेज इन द क्लास काफी अच्छा या अच्छे थे, उसके मार्क्स, मेंटल एस्पेक्ट्स भी हम देख रहे हैं कॉग्निटिव के साथ साथ उसमें चेंज है। रिलेशनशिप, वो जो फ्रेंड्स के साथ बहुत घुले मिले और जोवियल और फन लविंग और एक अच्छे मूड में रहने वाले बच्चे थे, वो अब चेंज हो चुका है। उसमें एक रिलेशनशिप स्टेटस, टीचर्स को बिलीव ना करना, ट्रस्ट ना करना, विश्वास ना रखना, भरोसा ना रखना, किसी बड़े को बड़े को रिलेट ना कर पाना एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये सारी चीजें, ये जो चेंजेस है इनमें हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर हम सेफगार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें, मतलब स्कूल में या वो कोचिंग सेंटर में या वो एकेडमी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट या असर पड़ने वाला है। अगर हम अब्यूज के बारे में बात करें तो रेप्यूटेशन डैमेज होता है, डेफिनेटली रेप्यूटेशन डैमेज होता है। लॉस ऑफ प्लेयर्स, उस एकेडमी में क्यों कोई स्टूडेंट भेजेगा या कोई कैंडिडेट भेजेगा या कोई सब्जेक्ट भेजेगा। लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ऐसे एकेडमी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे स्कूल, ऐसे कोचिंग सेंटर, ऐसे स्कूल्स में हम बिल्कुल confidence lose करेंगे। We think that any parent is going to think that, any caregiver is going to think that we should not send our students to such an organization. And loss of trust, like I just said, भरोसा टूट जाना। Then the children or the athlete also need to be protected and safeguarded from discrimination. हम discriminate करने लगते हैं
सफेद में, गोरे में, काले में, बड़े घर के और छोटे घर के में, एंड लैंग्वेज में, एंड पुअर और रिच में, एंड कम्युनिटी में, एंड कास्ट में, इस डिस्क्रिमिनेशन से हमें बचना पड़ेगा अगर हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर हम सेफ गार्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम इन छोटी और बहुत ही नीची सोच के साथ बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, तो आई एम श्योर वी आर नॉट molding and grooming a very good future for the nation. And many things have changed. रवैया बहुत सारी चीजों में change हो चुका है. I am sure things will definitely change in another 10 years, 20 years, and things will become more and more positive. But yes, the complaint of online crime, of cyber crime, is definitely not decreasing. It is increasing, and the POCSO Act has also increasing number of reports and increasing number of complaints. So I don't know what exactly is going wrong, but things are not in the right direction. And I'm sure this is the reason why Khelo India and MYAS has taken this as a important addressing subject on E-Khel Pathshala. When we are talking about POCSO, let me give you some more details about certain very important issues that have taken place, and why we need to be more and more careful, and why we need to be more and more protective regarding our children. Two victims, when interviewed by the Indian Express, spoke about how he used to come for personal coaching, isolating them from the rest of the group, and then touching them inappropriately during massage when nobody was around. One of them even tried to commit suicide and had frequent nervous breakdowns. She faced problems in forming relationships, intimacy, and found it hard to trust older men when she grew up. The athlete didn't know how to say no because she was afraid of the coach. He would make her sit on his lap and say, "I am like your father." And she says that now they are teaching children about good touch and bad touch. But at that period of time, during those times, there was no such sessions on good touch and bad touch, and such classes or such workshops or such seminars or such social media awareness. And he would ask the athletes to behave like husband and wife. There was a threat to tarnish the names when they said that they are going to report such matters and such issues to the media. He replied saying that he shall tell them that you are cooperating with me on this. And parents also kept on believing initially, because the parents were not so aware and very negligent about certain such issues. So this is one of the very famous coaches of very national repute, and the IPC Act has already been imposed upon him, and that's why I could take this incident as a record on this platform. Otherwise, I wouldn't have taken. 15-year-old athlete committed suicide, and 3 others were hospitalized after consuming poisonous fruits in one of the water sports countries of Sports Authority of India. 19-year-old national level runner filed a sexual harassment complaint against Chennai-based athletics coach P. Nagarajan, and following her, 70 others reported the same. He has mentored several other national medalists for the last 30 years. The coach is presently facing charges under the IPC and POCSO Act 2012. Yes, these are not very good data. These are not very good informations, but these are information that will open our eyes and ears so that we can protect
The children whom we have taken under our custody, for giving them training, for giving them our future, for bringing laurels to our country. So please be careful in safeguarding, protecting these valuable children. India has become an online hosting hub for child sex material. According to Interpol, an estimated 2.4 million instances of online child sexual abuse were reported from India from 2017 to 2020. 80% of them were girls under the age of 14. The number of juvenile minors, usually those under the age of 18 years, taking up crime is very, very alarming situation in this country. And let me remind you, this country has 47.2.1 crore, and out of which 39% of the population are under 18 years. As far as India is concerned, a few players of the Indian national women team hockey registered a formal complaint in 2010 regarding sexual harassment against the then coach Krishna Kaushik, Maharaj Krishna Kaushik. Thangam Ranjita Devi sent an email to the Hockey India Federation regarding this issue in 2010. The NCRB, that is the National Crime Record Bureau, revealed that crimes against children increased by 45% in 2019 as compared to 2018. There were about 1,48,185 crimes against children reported in 2019. And about 31.2% cases of crime against children were registered under the POCSO Act 2012. The Ministry of Women and Children Development, MWCD, Government of India, since 1st April 2015, have taken some initiatives and steps by establishing Sakhi, one-stop centers, OSC, they are called as OSC, the one-stop centers known as Sakhi, within a hospital or medical facility to provide support and assistance to victims of violence, gender violence. There are about 683 OSCs, one-stop centers like Sakhi, in different state and union territories in the country. It consists of facilities like medical, police, guidance and assistance, social assistance, legal and counseling to the victims who have gone through such abuses. So these are a few initiatives and steps taken by the Government of India to help in certain cases that are associated with the violence and the abuses that the children are going through. And after we have covered up a lot of things that are related to the abusive aspects of sexual and physical and psychological, we also have to take care of other environmental issues that are dealing with the safeguarding and protection of our children. And out of which we can just go through that we have to take care of the fire safety of the children in the school premises or in the tuition premises or in the premises where the fitness is going on, or academies where they come for the training of certain games and sports that they have selected. Supervising the children all the time. We cannot leave the children unsupervised, unattended at all. The electric wiring system, placement, and there are many things actually that come under these things. But what we have to take care and we neglect many a time are weather emergencies. Sometimes it is too hot, then we have to take care of the indoor facilities. Sometimes it is too cold, we cannot give them exposure to the extreme cold climatic conditions.
we are often very negligent about the drinking water facilities. कई बार हम देखते हैं कि drinking water facilities RO कहाँ पे installed है, in the corridors in front of the classrooms or inside of the classrooms, but it is not in the fields, in the grounds, in the playgrounds. That is also something to be taken care of. Does the child only need that kind of an RO or a safe drinking water facility in the school building, not on the playground? So that also has to be taken care of, and initiative has to be taken care for installing such facilities on the ground and field also. तब वो garden का पानी क्यों? If it is there in the school building, then it also has to be provided somewhere around the school ground. Then what kind of ground we are using for what kind of game? If we are using games like basketball and where the cemented court can be used, but we are using football, we are making them play football, then cemented ground is not a very ideal thing and we should not go for it. Skates, if the school has facilities of skates, yes, cement is very good, but where muddy and grassy ground should be provided, that is the surface that is ideal. तो हमें ये देखना है कि हम किस surface में उन्हें खिला रहे हैं, और फिर हम उन्हें कुछ सेक्सुअल असॉल्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए कौन से कॉम्बैटिव गेम्स लाइक कराटे एंड जूडो का ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं, उन्हें सिखा रहे हैं कि नहीं सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हम बोल तो रहे हैं कि हाँ प्रोटेक्शन करना है, पर सेल्फ डिफेंस की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, फैसिलिटीज हम दे ही नहीं रहे हैं, कोचेस हम दे ही नहीं रहे हैं. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फिटिंग्स. हम जानते हैं वहाँ स्विंग्स है प्लेग्राउंड्स में और स्लाइड्स है, क्या हम टाइम टू टाइम उन फिटिंग्स के बारे में, उन बोल्ट्स एंड नट्स के बारे में, वो पुर्जे जो उनको टाइट कर रहे हैं उनके बारे में हम चेक कर रहे हैं कि नहीं फ्रॉम टाइम टू टाइम? उनमें जंग लग चुके हैं, उसका रस्ट उसको टेटेनस का इंजेक्शन या टेटेनस सेप्टिक करवा देगा, इसका गारंटी क्या हमने लिया हुआ है? हम बस इंस्टॉल करके ओके है, ओके एवरीथिंग इज ओके? नो, we have to keep a check on that because we are concerned about our children. We are answerable to them. We are accountable to them. हमारे ग्राउंड्स में ग्लास चिप्स है, स्टोन्स है, कल कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहां पे हुआ है, अगले दिन हमारा स्कूल है, हमारा गंदगी और गार्बेज उसमें डला हुआ है, उसी में ही हम अपना फिजिकल एजुकेशन क्लास या स्पोर्ट्स क्लास अगले दिन कंडक्ट करवा रहे हैं. तो ब्रिक्स है, काम चल रहा है, कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनके स्टोन चिप्स है. तो ये सब हमें डेफिनेटली फ्रॉम टाइम टू टाइम क्लियर करवा कर ही हमारे क्लासेस को कंडक्ट करवाना है. रोड साइड में अगर है तो वो प्रॉपरली वॉल्ड या बाउंड्रीड या फेंस्ड है कि नहीं, बिकॉज देयर आर समटाइम्स मेनी गुड स्कूल्स, मेनी स्कूल्स व्हिच इज in the heart of the city, which is in heavy traffic located. So we have to take care of all that also. Then if we are giving them midday meal, is it a proper balanced diet? Is it a proper nutrition that we are providing them? Are we safeguarding the children in that case? Because I will give you data and information on how midday meal has also created so much of chaos and havoc and has taken lives. If it has not been supervised properly, it has been poisoned. And many a times it has been seen that claim is such that they are giving balanced diet, but the claim is not, but they are not giving balanced diet. Then we have safety equipments. अगर कुछ गेम्स में हमें ग्लव्स यूज करना है, हमें एल्बो गार्ड यूज करना है, नी कैप्स यूज करना है, are we using it? अगर हेलमेट यूज करना है, are we using it and then asking the child to play, or they are just playing without any kind of safety equipment or gears? Outdoor playtime is not social or break time for adults. Keep a note of that. That is a very important thing to remember. ट्रांसपोर्टेशन के टाइम हम ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि हमारे व्हीकल्स, हमारे जो बसेस या कार्स या जीप्स हम यूज कर रहे हैं या टोटो हम यूज कर रहे हैं, उनका स्पीड लिमिट क्या है? वो कोई भी स्पीड लिमिट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बच्ची को फ्रॉम होम टू स्कूल, फ्रॉम स्कूल टू होम. Seat belts, are they providing seat belts? Are they making them sit in proper sitting arrangements? पता चला कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं था, कोई भी बैक में पेन नहीं था, but these seats are
responsible for a new deformity, for a back pain. So we have to take care of all these things. These also come under the safety of the child, the safe environment of the child, for the protection of a child. हम फील्ड ट्रिप्स में ले जा रहे हैं, हम म्यूजियम विजिट्स में ले जा रहे हैं, हम एक्सकर्शंस में ले जा रहे हैं, हम कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को विजिट करवाने ले जा रहे हैं. हमें यही नहीं मालूम कि चाइल्ड का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है. चाइल्ड को हम जब कुछ खाना देंगे जो हमने स्कूल से ही बंदोबस्त किया है, if home has not, if the parents have not sent it, we don't know whether the child is allergic to a certain product or not. Some butter or some ghee or some toffee, some chocolate, whatever. We don't have any idea, any health record from the parents' side that is the child allergic to some kind of a product, food product. So all those are very important aspects of safeguarding. So keeping a health record is a very important aspect. वो हम health sciences में जो पढ़ते हैं वो ये जानते हैं, health records बहुत important है. उसमें all kinds of health aspects आप record में रखते हैं, certificates रखते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट्स रखते हैं, एलर्जीज अगर कुछ है तो वो उसका खबर रखते हैं, मेडिसिन से अगर कुछ एलर्जी है वो उसका भी खबर रखते हैं. एवरीथिंग हैज टू बी रिपोर्टेड इन दैट हेल्थ कार्ड to promote athletes' physical and mental well-being also. Like suffering from a corona has taught us one thing: if you are suffering from any kind of communicable disease, cough and cold, simple cough and cold, that is very contagious and communicable. Do not send the child. If it has happened in the school, please isolate the child. There is no requirement for the child to be with and around the other children who are not infected with that germ. Menstruation cycle of children who have got to the puberty stage after 12, 13, 14 as far as female children are concerned. Many of them do not take care of their 3-day cycle, 4-day cycle, 5-day cycle. They give enough amount of load without understanding how the designing has to be done. That this load is not to be given on the 2nd day or the 3rd day or the 1st day when the ovulation period is going on. Because that is the time when research has indicated very clearly that यही time है जब सबसे ज्यादा भयंकर इंजरी किसी फीमेल को हुआ है, ACL tear हुआ है या बैक पेन भयंकर उस टाइम से डेवलप हो चुका है. Because that day is the day when it is the most injury prone day, because she is susceptible to injury in that ovulation period. If something is to be communicated to the parents, immediately the coaches and the teachers and the caretakers should communicate to the parent कि एक छोटा सा इंजरी, बड़ा सा इंजरी, मीडियम प्रकार का इंजरी घटा है, हुआ है क्लास में. जब हम PE क्लास या स्पोर्ट्स क्लास करवा रहे थे तब हुआ है. एक क्रैम्प आया है, एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा इंजरी है, एक हीमेटोमा हुआ है. आप सब कुछ कम्युनिकेट करें पेरेंट्स को. अप टू डेट रखिए उनका इम्यूनाइजेशन. अब तो कोरोना ने ये बोल ही दिया है कि फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, ये सबका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए. टीकाकरण हर प्रकार का हुआ है कि नहीं, ये इम्यूनाइजेशन का कार्ड आप एक रिकॉर्ड में रखिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्ट एंड रिकवरी. हम बोलेंगे नहीं आप विद इन 3 days वापस आइए, नहीं. प्लीज गिव देम प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी. इफ एन इंजरी हैज टेकन प्लेस, if typhoid has taken place, if malaria has taken place, give proper rest and recovery to the child and let them come back after recovering properly. Allergies and rashes to be reported properly. Lice, हम सोचते हैं माता में जू एक छोटा कॉमेडी वाला बात है. डेफिनेटली नॉट. माता में जू भी कॉन्टेजियस है, पास होता है इधर से उधर, इसके हेड से उसके हेड, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द हेड, for the mental development of the child. So please take care of the health and hygiene part. Whether the head is being washed, whether the lice के लिए जो particular shampoos है वो use करके उसको खत्म कर रहे हैं कि नहीं. Otherwise the child is always diverted and we are not taking care of that safety and that health and hygiene part and protection. Fire safety के बारे में आप ड्रिल्स करवाइए फ्रॉम टाइम टू टाइम. What they have to do, stay low and go. That they have to understand the drills, how they have to vacate a particular building, where the extinguishers are kept,
किस तरह से एक्सटिंग्विशर काम करता है, फंक्शनिंग क्या है उसका, कहाँ कहाँ उसको इंस्टॉल किया गया है, अगर फायर लग भी जाता है तो। इमरजेंसी मेडिकल केयर आपका एकदम रेडी होना चाहिए। अगर आप कभी भी इमरजेंसी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ चाइल्ड फाइल शुड बी रेडी। Child has this kind of record, child has that kind of allergy, child has this kind of asthma and breathing problem, everything should be ready, record ready रहना है। पॉइजन का जो आप पिल कैन किल, कुछ भी हो सकता है। आपका जो कॉल है, जिसको आपको कॉल करना है, आप पानी भी नहीं देंगे विदाउट कॉलिंग। पहले आप कॉल करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ स्टेप करेंगे जब आपका पॉइजन से अफेक्टेड हो गया है चाइल्ड। सो देयर आर सेफ्टी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। विंटर में आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आप एक गर्म वाले जगह में रहते हैं। विंटर वाले जो है, जो पहाड़ी इलाके के हैं, वो समझ सकते हैं कि अगर उसके पास प्रॉपर ग्लव्स एंड प्रॉपर कैप्स एंड प्रॉपर वार्म क्लोथ्स नहीं है तो क्या करना पड़ेगा और किस तरह से उनको विंटर से प्रॉब्लम हो सकता है। समर सेफ्टी, अगर आप प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके नहीं चल रहे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड प्रोटेक्टिव वेयर नहीं कर रहे हैं, आप हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प से अफेक्टेड हो सकते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर आपने नहीं किया है तो आपका डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ड्राउनिंग, जिनके पास स्विमिंग पूल्स है या कोई और रिवर फैसिलिटी में आप जाकर उन्हें स्विमिंग सिखाते हैं, क्या आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर लाइफ गार्ड, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड गियर्स हैं, जिससे ट्यूब्स है, टायर्स हैं, जिससे आप उनको सेशन करवाने के टाइम बचा सकते हैं, डूबने से बचा सकते हैं। क्योंकि डूबने के बहुत इंसिडेंट्स है और बहुत आंकड़े ऐसे बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा डूबने के कारण बच्चा अपना जान खो चुका है। फर्स्ट एड एंड सीपीआर, फर्स्ट एड इक्विपमेंट किट में आपका क्या क्या सामान होना चाहिए। आपका प्रिजर्व लाइफ होना चाहिए, आपका प्रिवेंट डिटोरिएशन होना चाहिए, आपका प्रोमोट रिकवरी होना चाहिए, प्रोवाइड पेन रिलीफ होना चाहिए, प्रोटेक्शन अश्योरेंस होना चाहिए, प्रोवाइड रेलेवेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए। You should be able to give CPR if required. Someone who is equipped and learned about the training of CPR, that should be applied immediately when such an emergency situation has taken place. इस वीडियो में आपको BLS की प्रक्रिया दिखाई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात आप CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के क्रम को जानेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता कहीं भी कभी भी पड़ सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश तथा सांस नहीं ले रहा तथा पल्स भी नहीं है तो उस व्यक्ति को CPR की जरूरत है तथा अच्छा CPR उसकी जान बचा सकता है। अब आप एक व्यक्ति जो कि अस्पताल के बाहर कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित हो गया है, उसे CPR कैसे देते हैं यह देखेंगे। सबसे पहले मरीज का रिस्पांस और सांस की जांच कीजिए। मरीज के कंधे छाती को दबाकर पुकारें, क्या आप ठीक हैं? इसी के साथ देखें कि क्या मरीज की सांस चल रही है। यदि मरीज प्रतिक्रिया नहीं दे रहा अथवा सांस ठीक से नहीं चल रही है तो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तथा 108 को एक्टिवेट करें। उन्हें ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी कि AED भी लाने के लिए कहें। इसके तुरंत बाद मरीज की कैरोटिड आर्टरी की पल्स चेक करें। पल्स चेक करने में कम से कम 5 सेकंड तथा ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड से अधिक समय ना लें। कैरोटिड आर्टरी पर नब्ज का पता लगाने के लिए 2 या 3 उंगलियों से पहले ट्रेकिया का पता करें और फिर धीरे धीरे उंगलियों को एक तरफ खिसकाते हुए स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के ग्रूव में लाएं। अगर कैरोटिड पल्स नहीं मिल रही तो तुरंत CPR शुरू करें। CPR के 3 स्टेप्स C, A, B क्रम में करने हैं। C का मतलब चेस्ट कंप्रेशन, A यानी एयरवे और B यानी ब्रीदिंग। चेस्ट कंप्रेशन देने की जगह निश्चित कर लें। यह जगह 2 निप्पल को जोड़ने वाली लाइन पर स्टर्नम के ऊपरी 2/3 तथा निचले 1/3 हिस्से के पॉइंट पर होती है। चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए खुद के हथेली का निचला हिस्सा यानी कि
हील ऑफ द पाम का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी हथेली इसके ऊपर रखी जाती है। कंप्रेशन करने हेतु अपनी भुजा को सीधा रखना होता है और कंप्रेशन के लिए खुद के शरीर के वजन से प्रेशर बनाया जाता है। सिर्फ कंधे हिलाने से पर्याप्त मात्रा में प्रेशर नहीं बनता। कंप्रेशन की डेप्थ हर बार कम से कम 5 सेंटीमीटर अथवा 2 इंच होनी चाहिए। कंप्रेशन करने के लिए जितना समय लगता है उतना ही समय चेस्ट रिकॉइल के लिए देना जरूरी है। कंप्रेशन की गति कम से कम 100 कंप्रेशन पर मिनट होनी चाहिए। कंप्रेशन से सर्कुलेशन मेंटेन होगा और साथ में रेस्पिरेशन के लिए एयरवे मेंटेन करते हुए रेस्क्यू ब्रीदिंग करना होगा। एयरवे मेंटेनेंस के लिए हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करते हैं। रेस्क्यू ब्रीदिंग या वेंटिलेशन देने के लिए नाक को दबाकर नोज पिंच करते हुए मुंह से सांस देनी है। हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना जरूरी है। एक ब्रीथ 1 सेकेंड तक देनी है। ब्रीथ देते समय चेस्ट राइज होना चाहिए। सीपीआर में कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ की गति बहुत ही अहम है, इसलिए हम 30:2 के अनुपात में कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। इसे एक साइकिल कहते हैं। ऐसी 5 साइकिल हमें 2 मिनट में पूरी करनी होती है। 2 मिनट के पश्चात आपको फिर से मरीज का रिस्पॉन्स, कैरोटिड आर्टरी पल्स और ब्रीदिंग चेक करना है। यह चेकिंग ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में हो जानी चाहिए। यह प्रक्रिया मरीज के होश में आने तक तथा अन्य रेस्क्यूअर आने तक जारी रखना है। I'll just quickly skip because as far as participation in competition do's and don'ts, we don't have much time. We need to know that we have to keep our players safe by all means before going for the actual participation in such a competition. We need to know that they are in the right conditioned stage, fitness से related, skills से related, technique से related, नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड और एक एटीट्यूड से रिलेटेड, मतलब एक तैयारी, एक प्रिपेयर्डनेस, एक प्रिपरेशन। ये सबसे जब वो प्रिपेयर्ड है तब वो पार्टिसिपेशन करने के लिए रेडी है। उससे पहले अगर वो किसी भी एस्पेक्ट में या एंगल में डाउन है, कमी है, उस पे वी हैव टू वर्क एंड देन ओनली ही शुड बी एबल टू और शी शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन। इन हर एंगल जो मैंने बोला, स्किल से, टेक्निक से, टैक्टिक्स से, कंडीशनिंग, फिटनेस से, हेल्थ वाइज, मतलब सब कुछ आता है लेकिन उसे मलेरिया हो गया है तो वो 7 दिन घर में बैठा था और उसकी रिकवरी चलती रही, या सब कुछ आता था लेकिन उसको हीट स्ट्रोक हो गया था क्योंकि वो बहुत भयंकर गर्मी में वर्कआउट और उसका गेम चल रहा था, प्रैक्टिस चल रहा था। उस स्टेज में वो रेडी नहीं है सब कुछ आते हुए भी, क्योंकि उसके साथ एक जो नहीं होना था, प्लान नहीं था। हम बीमारी कभी प्लान नहीं करते, वो एज एन एक्सीडेंट हो जाता है, वो हो गया। सो देन दे आर नॉट रेडी। पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन हैज टू बी, कीप इट इन माइंड दैट द चाइल्ड इज कंप्लीटली रेडी by all means, by all aspects, and only then you make the child participate. Otherwise you are making him or her participate in a position where he is not ready by all these points that I just mentioned. And then when he is not ready or she is not ready, some kind of problem is about to occur, will occur. It is inevitable. वो होगा ही होगा. So avoid participation if they are not ready, unwell, if they are injured, if they are having or suffering from some kind of a disease, if they are not technically sound, skillfully very correct and right and conditioned and has the fitness to go through that kind of a game of the level that we are talking about. It can be under 10, it can be under 14, it can be under 16, whatever your child's age group is and the level is. And as far as the coach safety and protection is concerned, all this we did and we spoke about and we talked about from the angle of the child. There are certain things in which the coach can keep some safety always
and the coach will be safe and protective. जैसे कोई भी ऐसी जगह में आपको with the child अकेले जाना ही नहीं है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है. अगर बहुत सारे लोग नहीं भी है तो एटलीस्ट टू रूल फॉलो करना है. 2 रूल जैसे उसमें एटलीस्ट 2 people है, so that those 2 people are witnessing whether something wrong has happened or not happened. कोई अकरेंस हुआ ही नहीं, वो 2 लोग काफी है बोलने के लिए. ज्यादा से ज्यादा तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसे ही जगह बाथरूम के आसपास या लॉकर रूम्स के आसपास, इफ द कोच इज अ मैन एंड द टीम इज अ फीमेल टीम, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट. व्हाई डू यू नीड टू इवन गो beside the ladies toilet or changing room or the locker room? And also during the travels, when you are going for inter-university, when you are going for inter-schools, when you are going for inter-districts, when you are going for inter-states with the school team, with the SGFI team or the Khelo India youth team, you need to be very particular about whom you are sitting with, whether it's a whole group or whether you're only sitting with a particular person alone, separated, isolated. Even if the reservations and the tickets were done in such a way that नहीं हो पा रहा था, एक ही का यहाँ इस साइड हो पा रहा, उसको भी आप बाकी टीम के साथ एडजस्ट करके, को पैसेंजर के साथ एडजस्ट करके कुछ कर सकते हैं, rather than keeping with you only if you are of the opposite sex, which can be avoided. These things are places and areas which can hamper things unnecessarily, create complications unnecessary. आपने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली उनको व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे. आप पर्सनल मैसेज का कोई स्कोप ही मत रखिए, कोई एरिया ही मत रखिए. जो मैसेज है 4 बजे बेटे आपको पहुंचना है, होल ग्रुप विल रीच एट 4 o'clock because the message has been given in the whole group. You are not messaging them personally that आप 4 बजे कहीं पे पहुंचिए, ग्राउंड पे पहुंचिए या कोई एरिया में पहुंचिए या जहाँ पे आपका इनॉग्रेशन सेरेमनी होगा वहां पे पहुंचिए. तो दैट इज गिवन टू द होल ग्रुप, नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर स्टूडेंट. सो दीज आर कोचिंग स्टैंडर्ड्स. आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कोई लूज टॉक करने का स्कोप ही नहीं रख रहे हैं, आप कोई फाउल लैंग्वेज यूज करने का स्कोप ही नहीं रख रहे हैं, आप कोई बेकार का जोक यूज करने का स्कोप ही नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस कोचिंग स्टैंडर्ड में इतना टाइम ही नहीं है कि आप बेकार की चीजें डिस्कस कर सकें. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड पेरेंट्स एंड गार्जियन शुड ऑलवेज बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेशन. आज आपका ये सेशन है, आज इस सेशन में ऐसी इंजरी का हुआ है और इसका रिपोर्टिंग हम आपको कर रहे हैं. और ये कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स एंड द कोचेस आर अ वेरी वाइटल एंड क्रिटिकल थिंग फॉर द प्रेजेंट जनरेशन. थिंग्स आर नॉट सेम दैट इट यूज्ड टू बी. पहले के जमाने में फोन नहीं होता था, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती थी. आज का जमाना अलग हो गया, जहाँ फोन है, जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ अवेयरनेस है, अलर्टनेस है. सो वी एज कोचेस ऑल्सो एंड टीचर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल. वी आर अकाउंटेबल एंड वी आर answerable and we are the caretakers. These are the children who are going to become the next future generation leaders and flag bearers of the country. So we better be very good with them and we make a very good future for our country. Thank you very much. I think I should give a pause to my session right here, Dr. Gangwar. Yes, ma'am. If they have things to ask or queries to talk about, they can. Yeah, sure, ma'am. Sure. I'll just take up a few questions from the participant. So thank you so much, ma'am, for very informative and detailed session. Dear participants, once again, I requesting you, if you have any question to discuss with madam, our expert, please drop your question in question answer section. Someone has written very nicely, no question, thank you. This is actually duty. Yeah, duty time, and most of they are in schools and their institutions. Yes, and I ma'am, because my foundation day program is going on and I am getting so many calls, but this was a very important topic and a very important platform. So denying Dr. Gangwar was not possible at all. Yes, Gangwar.
Yeah, ma'am. Thank you. Thank you. We understand, ma'am, because of this LNIP Foundation Day, all. But even though you take out time, ma'am, one of participant, Mr. Mubasir, he wants to know how much time we should give this kind of compression. Compression. Yeah. I think the video was very clear. So how many strokes and all that I can send. I have already sent the material to Dr. Gangwar. When he can email you, the video is very clear. Actually, for children, it is a little less. So maybe for children, I will send Dr. Gangwar again. Okay. Yeah, ma'am. We'll share with all the participants. Thank you, Yeah. ma'am. The next question is the name is not there. When we teach a skill, how it is possible without body touch? One question is there, madam. Yeah, very good question. If we are talking about gymnastics and judo and any other body contact game, then the body contact is very important. But again, you are the one who is responsible for that kind of a body contact. If you think that you can touch anywhere and everywhere while giving that kind of a coaching, then you are wrong. If you think that you are giving it in a very technical manner and no unnecessary touching is going on, then you are doing the right thing in the name of the skill and in the name of the honor of the game and sport and also in the name of conscience. विवेक जो कहता है, ठीक है? Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, one more question is from our participant Usha Kumari. How to, that is maybe some out of the topic, maybe a little bit, but related, like how to develop mutual understanding between the coaches and the students. Mutual understanding is based on a lot of mutual interest. If he or she is also interested in getting a medal and you are also interested in getting a medal and not any other altu-faltu bakwas and other things, then the mutual understanding is only one goal, the one objective. That is my performance. And for that, I will do whatever you ask me to do, but not in the wrong thing. I will do only things that will get me the medal and nothing unnecessary. That is mutual understanding. Yeah, thank you, ma'am. Ma'am, we'll take the last question as we have time foundation. So that during training. नहीं देना है, किसी ने लिखा है जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कैसे माउथ टू माउथ, कोरोना चल रहा है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग अभी मत दीजिए, अभी उसको कुछ और ब्रीदिंग देके हम हॉस्पिटल भिजवा देंगे. Yes, thank you, ma'am, for taking that question. One more question is there. Like during training, physical education teacher or coaches should touch hand or leg of female child if they got some injury. So how we can deal those situations? And there is a pain in the child. The child will very well understand that you are doing it for the protection from that injury and pain. Child is very active. Today's child is very intelligent. Today's child knows whether that is a good touch or a bad touch. If you are doing it with good intention, child will know that you are doing it for the relief of the pain. If you are doing it with a bad intention, that touch itself will be very indicative. And if it is a non-intelligent child, then he will be susceptible to some wrong things that we cannot help. So you be careful and do not give bad touch. Yeah, thank you so much, ma'am. Very valid answer you have given. So, ma'am, we'll stop here only without permission. And thank you once again. Thank you so much on behalf of Ministry of Education, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Sai, Hello India, and the organizing team from LNCP Trivandrum, on behalf of our principal, sir. I personally extend our heartiest thanks to you, madam, for coming and delivering a very informative and wonderful session to the participant. Thank you so much, ma'am. Thank you very much, Dr. Gangwar, and thank you, Dr. G. Kishore, sir, for giving me this opportunity and to conduct this session on such a huge platform. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Dear participant, once again, thank you so much. A poll has been launched for you people. Please take part and give your valuable feedback so that we can have a better learning in coming days. Thank you, participants, for joining. We'll have another session for today that will start at 3 p.m. So we'll see you there. Thank you once again, everyone, for taking initiative in the session. Thank you so much. Thank you. Thank you.